Hold on. So this is after a long time. Good morning, and this is a session where we are doing SAT Maths. And मैं आप लोगों से बहुत time के बाद मिल रहा हूँ, so it's been a long time for me. And then there was some exam break. So we are doing chapter 8 of your book today. Chapter 8 happens to be around data interpretation, data inferences, tables, graphs, scatter plot, standard deviation, range, concepts like that. We will talk. So it's like, you know, more than what we can handle in one session is the agenda for this session. So we'll try and justify that. So अगर आपने ये session मेरे साथ पहले किया है and आप recall करते हो, and if you want to take a break, you do that. But if you want to do a revision, you want to stay with me, you have not done this before, this will be for sure a good opportunity. Now, since SAT has gone digital, with respect to this particular topic, guys, that we are doing today, there is no change in scope. This topic with digital SAT mathematics section remains as it is, and there's no change as such in the skill requirement. So whatever we'll do today is as relevant as it was with the paper pencil base. It is as relevant today also for digital SAT. Second thing, in case you're writing May SAT, मेरा आप लोगों से request है and strong advice है, please register yourself without any further delay. Though registration के लिए I think you have 3rd या 4th April या ऐसा कुछ time है. April first week में registrations end, but you will get your choice of center if you register much earlier than the registration end date. तो अगर May SAT देना है, digital SAT May का वाला देना है, digitally है. So if you want to do that, please go ahead and register yourself. Take help from Mrs. Shruti. She will help you out अगर आपको registration में कोई issue आ रहा है तो please वो कर लेना. चलो, अब let's go to the thing that we are going to do today. So like always, I've got PPT, I've got problems. You don't have to look into your books, not required. You can purely look at the screen and we can discuss and go ahead. So I'll replace the spotlight. Can you see my working space as the central screen? KHR Patil? Yes, sir. Thank you for that acknowledgement. So the thing that we are doing today is called Chapter 8. आज हम Chapter 8 कर रहे हैं, which is about, I'll call it DI, data interpretation. And then there are a lot of things into this. So as I go ahead, I'll talk about one small concept first. Whenever I say data interpretation, let us understand the skill that is going to be tested is you'll be given data in some format, scatter plot, line graph, two-way table. It could be anything. It could be a paragraph. And the idea is that you'll have to understand that articulation that is given to you. After you have understood, there could be small analysis or inferences that are to be drawn, and then you will have to mark your answer. So, अगर आप वैसे देखोगे in terms of skill जो चाहिए, percentages, ratio proportion, fraction, यही वाला skill चाहिए in terms of mathematical skill that is required, and some amount of statistics. Yes, and some amount of statistics is required as well. They can club these concepts with concept of parabola. तो parabola हो गया है क्या क्लास में? कोई इस बैच का है? I think Kesar Patil is of this batch. C5 में parabola हुआ है Kesar Patil? Sanvi is also of this batch, is it? नहीं. She is from C4. Kesar? No, sir. Okay, so the skills, the other topic where it can be mixed and matched is parabola, straight line, and probability. ये तीन और टॉपिक्स हैं जिनको हम मिक्स करके मिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं. सिंस SAT has gone digital, आप लोगों ने कुछ देखा होगा ब्लू बुक ऐप पे. You must have done some test. If not, please try. So you would have seen that maths has gone into two sections of I guess 22 problems each, and module 1, module 2 ऐसे बोलते हैं वो लोग उसको. section 2 में module 1, module 2 with time limit. So under both module you will find questions based on the concept that we are doing today. March SAT किसी ने दिया था यहाँ पे? March SAT दिया था? No one.
So the feedback I have from students from March SAT, they said that maths का module 1 was easier compared to module 2. Module 2 में थोड़ा सा toughness level across English and maths it went up, है ना. तो डिजिटल एसएटी जिस तरह से चेंज हुआ है, तो पहली बार हुआ था, यही समझ में आ रहा है दैट मॉड्यूल 1 इज पॉसिबली इजियर इन कंपैरिजन टू मॉड्यूल 2. सेम कॉन्सेप्ट बट थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ जाता है व्हेन यू मूव टू मॉड्यूल 2. सो अभी अब चालू करते हैं. आई थिंक दैट्स ऑल आई वांटेड टू से. लेट्स गो. सो डेटा इंटरप्रिटेशन, द स्किल दैट आई सेड इज टेस्टेड. अभी एक बार आई गो बैक टू माय प्रेजेंटेशन. इसमें I'll take some selected slides. So I hope this is visible. Video wala idhar and I become the spotlight. Yes. So guys, we are doing this today. We'll talk about reading graph, interpreting data, scatter plot, line of best fit. In sabka kya matlab hota hai, and what is this concept of standard deviation. So I'm not getting into this. Let's come down to scatter plot. Very interesting. Now scatter plot, मेरे आपको व्हाइट बोर्ड पे देखना है वर्किंग स्पेस पे. So scatter plot, basically, you have a 2-dimensional XY plane. मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Where you have something called as x-axis, where you have something as y-axis. This is independent variable. X-axis is basically independent variable. And this is your dependent variable, mostly dependent variable on y-axis. Okay, and the data is represented in form of scattered data points on a 2y plane. तो इसीलिए इसका नाम है. So data something like this, something like this, something like this. So over a 2D plane, you have these data points which is scattered on this 2D plane. This is nothing but a scatter plot, where of course you'll have to take care of the units out here. यहाँ क्या units है? Kilometer, second, hour, let's say thousands, lakhs, whatever it is. So it could be anything, sales, profit, anything. And similarly, you'll have to take units. यहाँ पे kilometer, centimeter, kilogram, liters, number of units, countries, whatever it is. So take care of units on both the axes. Very, very important, because question could be in different unit or seed answer could be in different unit. तो unit का ध्यान रखना है. Data scattered रहेगा, तो इसलिए इसको scattered plot बोलते हैं. In this scattered plot, at times there could be a line drawn through this data. ऐसा एक कोई line हो सकता है which would be a straight line. This line, guys, is called line of best fit. ये है line of best fit. Basically, line of best fit is nothing but, मैं यहाँ पे ऐसे लिखता हूँ, line of BF. ऐसा कुछ होता नहीं है, line of BF, ये अभी हमने ऐसे लिखा है. So line of best fit is basically nothing but an approximated line. अब ये क्या मतलब हुआ approximated line? So this is an approximated line, or this is a representative line of the given data set. इसको representative line भी बोल सकते हैं. इसको estimated या estimation भी बोल सकते हैं. किसी data set का ये line एक estimation है, representation है, approximation है. So line of best fit is a line basically that may be passing through data. You will see there are some data points like this one, which is on the line, but there are other data points which are above the line, and this is below the line. So a point on the line may not be the actual data point, or it may be the actual data point. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. But line of best fit basically means a line that is sample representation or representation of this given data set. I can always extrapolate this line to find some trend. Hence, this is also called as trend line. इसको ट्रेंड लाइन भी बोलते हैं. ये मुझे डेटा का ट्रेंड दिखा रहा है कि डेटा ऊपर की तरफ जा रहा है with increasing of x values on x-axis, y-axis is also increasing or decreasing, whatever. In this case, increasing. Generally, line of best fit, क्योंकि हम यहाँ पे line की बात कर रहे हैं, this will be a straight line.
तो आपने स्ट्रेट लाइन के जो भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, y इज इक्वल टू mx प्लस c, वो सब यहाँ पे एप्लीकेबल होगा. So line of best fit is a representative line. So let's say we are talking about, rainfall in month of in month of January in Mumbai in mm. मान लो ऐसी बात कर रहे हैं, और ये अलग 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 टाइम पीरियड है जनवरी मंथ का, और ये mm में कितना रेनफॉल हुआ है वो कुछ है. So basically, it is like a plot or data points are scattered. Let's say in the third period, this was the rainfall. This is very far from the line of best fit. But ये line of best fit का मतलब ये हुआ that there are some points which is pulling it up, there are some points which is pulling it down, and hence ये एक stationary position में हमको यहाँ पे दिखता है. जैसा कि एवरेज होता है, एवरेज का कॉन्सेप्ट यही है ना. एवरेज ऑफ अ डेटा सेट का क्या मतलब है कि इन सम डेटा सेट देयर आर पॉइंट्स. मैं खुद को स्पॉटलाइट बनाने की कोशिश नहीं कर सकते. हाँ, सो देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच इज पुलिंग डेटा अप, कुछ उसको नीचे पुल करते हैं, तो वो उसका सेंट्रल टेंडेंसी है, बीच में जाके कहीं हमको एवरेज मिलता है, समथिंग लाइक दिस. ये सब समझ में आ रहा है जो हम बात कर रहे हैं, लाइन ऑफ बेस्ट फिट. Now, questions could come on this line of best fit where they may say कि अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा तो किसी फ्यूचर पीरियड में प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या है. Hence, this is also called as prediction वाला line or line of prediction. This may be actual value, this may not be actual value, but as per this trend, prediction भी कर सकते हैं हम, इंटरपोलेट कर सकते हैं. इस पॉइंट पे लाइन ऑफ बेस्ट फिट के हिसाब से क्या वैल्यू है, हो सकता है एक्चुअल वैल्यू से वो मैच होता हो, एक्चुअल वैल्यू तो ये रहा इस पॉइंट का, बट वो उससे ऊपर है. सो देयर कैन बी पॉइंट्स ऑन द लाइन, बिलो द लाइन, अबव द लाइन, बट दिस इज लाइन ऑफ बेस्ट. सो दिस इज अबाउट स्कैटर प्लॉट. इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं है, बट आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव ऑन दिस. ये सब समझ में आया क्या जो हमने बात किया? सारा, कैलिब, ओके, केसर, निष्ठा. Okay, guys. So, चारुल, you feel free. तुम्हारा तो unmuted ही है. जहां भी तुमको लगे वहीं पे you just interrupt and ask me. Yes. So ये है line of best fit और हम ये scatter plot की बात. So it's all about data on a 2D plane scattered in a way, and line of best fit is nothing but a representation of this data. Okay, so जैसे for example, let's take a छोटा सा question and do this together, and I'll do with you. I'll do this problem with you. अच्छा, हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन, एक और कॉन्सेप्ट है. मैं ना वापस जाता हूँ. Let me go back. एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मुझसे मिस हो गया. So guys, I'll try and use a different color. So when we say line of best fit, let us understand that all the concept of line, which is y is equal to mx plus c, will be applicable to this, where y is equal to mx plus c. Where, what is c? What is c, guys? No, constant से improve करो इस definition को. Intercept. कौन सा intercept? The intercept on the y-axis. The intercept on the y-axis. So सिर्फ इंटरसेप्ट मत बोलो, सिर्फ कांस्टेंट मत बोलो. करेक्ट सारा. सो दिस इज इंटरसेप्ट. अगर मैं इसको एक्सटेंड करूंगा डाउनवर्ड्स, तो दिस इज द पॉइंट पॉसिबली सी वेयर दिस इज द स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ y टेक्स इक्वल टू 0, इनिशियल वैल्यू, संक कॉस्ट. ये सब आप लोगों ने लाइन के कॉन्सेप्ट में पढ़ा होगा. दिस इज नथिंग बट y इंटरसेप्ट. m is slope of this line. m is slope of this line. अगर ये थीटा एंगल बना रहा है और मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, m is slope of the line, x is the x coordinate, y is the y coordinate of particular point, and hence I get this line. ये concept ध्यान रखना. Then there is a concept of outlier. What do you mean by outlier? English dictionary meaning भी चलेगा. What do you mean by this word outlier? This is borrowed from statistics. Yes, I'm listening. Bolo. What do you mean by this word outlier? Anyone?
English dictionary meaning will do. And this is both meaning. एक statistics का meaning है data में outlier होना, और एक है English dictionary meaning. So for example, according to me, outlier is a point which lies outside हाँ, the. correct. हाँ, मतलब ये तो एक wise answer है ही ना. Outlier means a point which lies outside. Outstanding student is a student who is standing outside the class. Sorry for this bad joke, but नहीं, outlier का इतना simple meaning नहीं होगा निष्ठा. But I will pick from what you said. I'll not say you're totally wrong, but मैं इसको pick करता हूँ. Let me give you an example, rather a sentence. इसको vocabulary की class बना देते हैं. चलो. So if I tell you, and if I give you a sentence, Elon Musk is an outlier in the modern world. Elon Musk is an outlier in the modern world of entrepreneurs. Let me put it this way. Businessman, he's an outlier. What does this mean? He doesn't follow the tendency. Very good. Very good. Or the trend. So outlier और statistics में लगाते हैं. बहुत अच्छा तुमने contextual meaning drive किया, and that was my purpose. So Elon Musk would not follow whatever the trend would follow. जो society follow कर रही है, जो दूसरे लोग follow कर रहे हैं, आप देखोगे वो बिल्कुल हट के काम करता है. He is not representative of his generation, let me say. जो इस तरह से उसकी जनरेशन सोचती है, वो जिस जनरेशन का है, वो उस जनरेशन से बहुत अलग है, बहुत अलग तरीके. सो ये पॉजिटिव या नेगेटिव वाली बात नहीं है. ओके, सो अब इसको स्टैटिस्टिक्स में लगाओ. आउटलायर मतलब वो डेटा पॉइंट जो कि कोई पर्टिकुलर ट्रेंड को फॉलो नहीं कर रहा है, वो डेटा सेट के ट्रेंड से थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है. आर यू गेटिंग मी गाइस? स्टैटिस्टिकली क्या होगा, इसका एक फॉर्मूला होगा. By applying that formula, I can find out कि क्या उस डेटा सेट में ये डेटा आउटलायर है. वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, अभी उसकी जरूरत नहीं है. But outlier basically means a data point which is not behaving or following the trend as per line of best fit, or like Sarah said, as per central tendency. जो central tendency के हिसाब से है, जो law of averages है, वो उससे बहुत अलग कर रहा है. Okay, so for example, ये कौन सा highlighted है? So for example, let's say this point could be an outlier. Just an example, maybe may not be, मुझे नहीं मालूम, but ये point एक outlier हो सकता है इस data set में than other points. At the lower end, outlier lower end पे भी हो सकता है, higher end पे भी हो सकता है, but अभी let's say this. So outlier बस याद रखना, a data point which may not be following, which will not follow the trend line or the central tendency, is not representative, behaving differently from the society. Society in this case from the data set. Sanvi Bhaskar, am I clear? चल ठीक है. अच्छा चल रहा है IIT का प्रिपरेशन? सर ओके ओके. ओके ठीक है, तो आगे चलते हैं. स्कैटर प्लॉट एंड लाइन ऑफ बेस्ट फिट, ये मैंने आप लोग को बताया. अब ये वाला प्रॉब्लम वी विल डू इट टुगेदर गाइस, दो इट इज फ्रॉम योर बुक, बट आई वुड वांट यू कि स्क्रीन पे ही देखो क्योंकि साथ में कर रहे हैं. लेट मी यूज माय पेन. द फर्स्ट मेटाकार्पल बोन इज लोकेटेड इन हैंड. स्कैटर प्लॉट ऑन राइट शोज रिलेशनशिप बिटवीन लेंथ ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन एंड हाइट ऑफ 9 पीपल. दैट मींस देयर शुड बी 9 डॉट्स. काउंट कर लेना, 9 डॉट्स होने चाहिए. Line of best fit is also shown. Fantastic. Now to the question. How many of the 9 people have an actual height, actual height that differ by more than 3 centimeters from the height predicted by the line of best fit? ये हम साथ में कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत easy है, तो मैंने सोचा मैं ही कर लेता हूँ. आप लोगों को मजा नहीं आएगा इजी चीज करने में, साथ में करते हैं इसको. तो मैंने देखा लेंथ ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन एक्स एक्सिस, हाइट वाई एक्सिस, सेंटीमीटर, 9 डॉट्स होनी चाहिए. आई काउंटेड, हाँ 9 डॉट्स दिख रहे हैं. सो एक्चुअल हाइट डिफरिंग प्रेडिक्टेड हाइट बाय मोर देन 3 सेंटीमीटर. ध्यान रखना स्केल का. ईच लाइन ऑन वाई एक्सिस ये 5 है तो 1 सेंटीमीटर का है. चलो लेट्स सी व्हाट अबाउट दिस. वुड इट क्वालिफाई द फर्स्ट डॉट गाइस? 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर. 3 सेंटीमीटर से ज्यादा करता है.
This qualifies, right? The first dot. Bolo Caleb? Yes. So second one, no, this is not differing by, because predicted value line के ऊपर है, actual value वो dot दिख रहा है. Second dot is very close to predicted value and it is not differing by more than 3. Cannot be the answer. Third dot, yes. Fourth, nahi. Fifth, nahi. Sixth, this is like 1.5 types, nahi. This seventh, yes. Eighth, yes. Ninth is 2 centimeter. It is not more than 3 centimeter. So basically answer is 4, option B. बोलो समझ में आया? Okay. So there's somebody who entered the class. मुझे देखने दो कौन है. क्या मालूम कौन है, कोई नहीं दिख रहा है. हाँ, तो ये समझ में आ गया. This is how we do these problems. Of course ये एक बहुत ही easy था, छोटा सा question था. So we go to the next problem and I want you guys to do this. Please put your answers in the chat box. I give you 45 seconds. Go. Question number 3 from your book or from screen, wherever you want to do this. Answer in chat box and privately to me, not to everyone. A, B, C, D. Oh, wow. Got it, Callum. Correct. Correct, Nishtha. Okay, Sarah. So I got you here. Now hold on. थोड़ा सा समय है. You may want to reconsider, Sarah. Others, I'm waiting. So Charul, तुम कैसे आंसर भेजोगी? So Charul, you'll have to raise your hand and I will know you are done. Done. Please announce your answer. So it will be option C. C. Okay. Chalo, so let's start with you, Sarah. Is it C or D or B? Because you know options are so close and insane options है. 1 centimeter के gap पे दे दिया और इतना difficult हो रहा है. Let's see. So based on line of best fit, what is predicted height for someone with first metacarpal bone that has a length of 4.45 centimeters? Sarah देखो इसको ध्यान से. 4.45. So this is 4.1, 4.2, 4.3. Oh, this is pain using mouse. 4.3, 4.4, 4.4. A 4.45. So this would be somewhere here in between. यहाँ से एक मेरा straight line as straight as I can do with my shaky hands, and this is going up and this is going up. और ये कहीं यहाँ जा रहा है. For sure, it is more than 169 and not 171. Answer is 170. आपने क्या किया सारा? आई थिंक आप 4.5 आप पिक किया आपने. Am I correct? So वो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा and that's why they have written it like this, because वो जानते थे कि कुछ बच्चे 171 को पिक करेंगे. So answer is option C. Right, Sanvi. So we go to the next problem and I want you to solve. Let me see if I want you to solve this. ये हाँ ये मैं चाहता हूँ आप करें. And my friendly advice, read all 4 options. Please do this. Send me your answers privately. Beautiful problem.
Basically, what is slope of this line of best fit telling you? Uska interpretation kya is what they are asking. Correct, Saradas. I was trying this. Yes, Caleb. Okay. We shall discuss this. Ms. Bhaskar. Bolo Charul, please announce. Sir, option A. Option A. Okay. Caleb, you're changing your answer? Okay. Okay. ठीक है. And who else? निष्ठा, केसर. कहाँ हो तुम केसर? कुछ आंसर नहीं आ रहा है, क्या कर रही हो? ओके निष्ठा. ओके सो केसर वी स्टार्ट विथ यू. क्वेश्चन हम सबने पढ़ लिया है. प्लीज रीड द ऑप्शन दैट यू आर डिफेंडिंग. कौन सा ऑप्शन डिफेंड कर रहे हो? अनम्यूट करो. बी. ओके प्लीज रीड दिस. सानवी, हैव अ लुक. Tanvi, Caleb and Kesar, please pay attention. Kesar, unmute and read it loudly. The predicted first metacarpal bone increases in centimeters for every centimeter increase in height. ठीक है. अब Caleb, what is the formula for n? If you remember, किसी को याद है? Sanvi, formula for m. ये formula याद है क्या? y2 minus y1. Sanvi, याद है ये? Yes, sir. Upon x2 minus x. ठीक है. If you remember, guys, m stands for, मैं थोड़ा सा stop करता हूं because I was not expecting कि इतने सारे लोगों का गलत होगा. M stands for a small change in x. What is the change in y? For a delta change in x, what is change in y? So y2 upon y2 minus y1, change in y upon basis a small change in x, x denominator में है ना? I go back now. Let's read again option B. वापस देखते हैं. अगर आप लोगों ने ये समझ लिया है, so आपको मैं यहाँ डेल्टा लिख रहा हूँ. डेल्टा मतलब वही होता है चेंज इन y अपॉन चेंज इन x. ओह सो सॉरी. अपॉन चेंज इन x. ये होता है स्लोप का मतलब. आपने वो पढ़ा होगा. अब इसको वापस पढ़ते हैं. द प्रिडिक्टेड फर्स्ट मेटाकार्पल बोन इंक्रीज. मेटाकार्पल बोन है एक्स एक्सिस पे इन सेंटीमीटर्स फॉर एवरी चेंज इन वाई. क्या किया आप लोगों ने? मिस भास्कर, डिड यू रियलाइज? हैव यू रियलाइज्ड? आपने उल्टा कर दिया. कैलेब, दिस इज नॉट प्रिडिक्शन ऑफ फर्स्ट मेटाकार्पल बोन. ये डिपेंडेंट वेरिएबल थोड़ी ना है. फॉर एवरी चेंज इन हाइट नहीं, उल्टा. Predicted increase in height, that is change in y, for every 1 centimeter, change in x. Bolo. Okay. And Kesar, please unmute and tell me if I have made sense and you have followed. So मैं फिर बोल रहा हूँ, it is not that you guys don't know, it's just that these people, they will give you options to confuse and in your hurry थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है. तो इसका ध्यान रखना. आंसर इज ए. आगे बढ़े. आई थिंक आई एम डन विद दीज टाइप. कुछ और लेते हैं. लेट मी टेक अनदर प्रॉब्लम. चलिए, सैट चैलेंज प्रॉब्लम 1. ऑप्शंस में देता हूं, आप पहले ये क्वेश्चन पढ़ लो. मिनट्स प्लेड वर्सेस पॉइंट्स स्कोर्ड.
Of course, minutes played will be independent and points scored will be a dependent variable. Y होगा point score. वैसे ही plotted है. Let me know when you have read the problem statement. I'll give you options. चारुल, ये बुक में दिया हुआ है क्वेश्चन? हाँ सर। कौन से पेज नंबर पे? 100। पेज नंबर 100 पे भी रेफर कर सकते हो आप इसको, अदरवाइज स्क्रीन पे देख सकते हो, जो भी करना है, विच एवर इज कन्वीनियंट टू यू. Reading done. Can I show you options now? Okay. So which of the following equation best relates minutes played per game X and points scored per game P for the players of this team? Scatter plot है. मेरा छोटा सा advice again, elimination could be a very good tool here. So if I give this thumbs up, is it only visible to Sarah? हाँ ठीक है. चलो निष्ठा धवन, waiting for your answer. Okay. अब निष्ठा तुमको ना कुछ रिकॉल से भी हो रहा होगा, कुछ आंसर्स तुमको शायद याद ही रह गए होंगे. तो वो एक चीज है, पर ठीक है, विल डू. कुमावत जी हो गया क्या? हाँ, yes। अच्छा अच्छा, रुको, होल्ड करना, अभी अनाउंस मत करना. सो सारा, निष्ठा एंड चारुल के आंसर्स मेरे पास हैं. नहीं, चारुल का आंसर नहीं है, बट आई नो शी इज डन. आई एम वेटिंग फॉर केसर, कैलेब, सानवी. ओके कैलेब, डिस्कस करेंगे अभी. ये इसका एक फ्रेज है जो क्लास में भी यूज करता है, वही इसने टाइप किया है उतना लंबा. आई हैव टू पास दिस वन सर. ठीक है, तो अभी डिस्कस करते हैं. सानवी, केसर, आई गॉट योर आंसर एंड आंसर इज करेक्ट. सानवी, आई एम वेटिंग फॉर यू. Sir, I didn't really get this question. Okay. Okay. So, Charul, I am looking at you now. Please announce the answer. कौन सा ऑप्शन? सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी. ठीक है, तो बहुत सारे वो हैं, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है. सानवी, फर्स्ट लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग. इज ग्राफ क्लियर टू यू? ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये क्लियर है? ये खान अकेडमी लेवल 4 का क्वेश्चन है बाय द वे. ये क्लियर है? Yes, sir. So on x-axis, you have minutes played by a particular player and particular player or team जो भी है, and then respective points scored. So if somebody's let's say played for 3 minutes, point scored is 0. Played for slightly more than 6 minutes, उसने 6 points score किया. कुछ 33 minutes अगर कोई खेल रहा है तो around 15 points score कर रहा है. उसका एक ये ऐसा डेटा कलेक्ट करके प्लॉट किया गया है. राइट सानवी? दे आर आस्किंग कि इसका लाइन ऑफ बेस्ट फिट का इक्वेशन बना दो, या कौन सा इक्वेशन रादर, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन यू नो रिप्रेजेंट्स लाइन ऑफ बेस्ट फिट इन अ वे. ओके, हाउ डू वी गो अबाउट दिस? सो who should I ask? Charul, you want to take lead? I want to know your method. सर कैसे सॉल्व किया वो बताओ. सर बाय टेकिंग m y is equal to mx plus c वाला. एक मिनट, रुको रुको, आई थिंक ये ना मैंने भूल से इसको बहुत एनलार्ज कर दिया.
Hold on. Yes, this is better, but I'll have to go back. Hold chawal. Y equal to mx plus c से solve किया है आपने इसको. So I took 2 points as my. हाँ बोलो बोलो. Yes, go ahead. So I took 2 points, like the first one and the second one, 3 and 6, and then I just solved. ठीक है. I share my method क्योंकि अभी इतना interactive हो नहीं पा रहा है. Let me share my method. So look at this Caleb, Sanvi, and और अगर किसी का गलत हुआ है तो आंसर C है. Option C as in cat. So let's say इसका कुछ line approximated line ऐसा है Sanvi. Okay. For sure अगर इसका line of best fit ऐसे होने वाला है, so can I say इसका जो y intercept होगा वो origin के नीचे होगा? Can I say that? Caleb, y intercept will be below origin, and if that is the case, option B और D तो आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो भी इसका लाइन बनाओगे आप कुछ ऐसा बनाओगे या जो भी बनेगा इसका लाइन ऑफ बेस्ट फिट, इसका y इंटरसेप्ट ओरिजिन के नीचे रहेगा. तो मुझे ऐसा लगता है दैट हम B और D तो रूल आउट कर सकते हैं. Now the tough choice is between A and C. How do we break this situation, whether it is A or C? So to do that, what you can do is you can take some values for X and Y, let's say for option A and for option B, and for option B, X and Y for option B. नहीं B नहीं, sorry, C, because हमने B और C तो अब B और D तो rule out किया है, तो A को लेते. तो if X is 0, Y is -2. If X is 0, Y is -2 in both the options, isn't it? If X is 1, Y is 0. If X is 1, Y is -1.5. देखते जाना अगर मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूं तो. If X is 2, Y is 1. If X is 2, क्या होगा? Y -1. Rather, you could pick these points. So let me pick this point. If X is 3, 3 2s are 6, -2, 4. If X is 3, 1.5. If X is 3, this will be -0.5, -0.5. एक और point लेते हैं. Let's take 6. ये वाला point लेते हैं. So if X is 6, 6 2s are 12. This will be 10. If X is 6, this will be 1. आप ऐसे जब points लेंगे, take 9 for example, or take 12, or take 15 or 18 ka half. You can take this, or take 15. You will see that your values will lie more closer in option C than A. And hence answer is option C. बोलो ये समझ में आया क्या? And I'm also okay if you want to discuss this. Sarah, Kesar, Caleb. Okay. ठीक है सारा? Was this your method? किसी का कोई अलग method था when you got option C as your answer? नहीं. So ये कर सकते हो, eliminate करो, y intercept देख के दो options eliminate हो जाते हैं. Then you pick 3, 6, 9, put it there, see which option gives you more closer value, because वो anyway approximated. So this was from Khan Academy level 4. आगे चलते हैं. Do I want to do this? Yes, I want to do this. Beautiful. This is actual SAT problem. Let's do this one. I give you 1.5 minutes. Please solve.
Correct, Sarah. Yes, Caleb. Correct. Kesar, correct. Yes, correct, Sanvi. Next time, waiting for you. So everybody got this right. Nishtha Dhawan, please unmute yourself. And read the question loudly. इसको जोर से पढ़ो, अभी solve करते हैं इसको. The scatter plot above shows the income in thousands of all the employees of company X based on years of experience in the industry. Based on the line of best fit to the data represented, which of the following is the closest to the expected number of years of experience of an employee whose income is 30,000? है ना? आप कौन सा ऑप्शन पिक किया है आपने निष्ठा? C. सी में कितना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वो? 37. 37 दिख रहा है क्या ग्राफ में? 37 इयर्स अभी कहीं पे नहीं दिख रहा. और सैलरी कितना होना चाहिए? सैलरी कितना है निष्ठा? $30,000, राइट? Yes, sir. मतलब ये वाला पॉइंट है ना, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा 30,000 बोलो. Yes, sir. तो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ये यहाँ पे 37 दिख रहा है जब नीचे जाएंगे तो. No, I'm sorry. गड़बड़ किया है ना? तो राइट आंसर क्या है? B. सॉरी, 5. 5.55. Yes, sir. B. इससे तो ज्यादा है फॉर श्योर. तो हाँ, एक ही ऑप्शन बचता है विच इज 5.55. ओके. Yes, sir. Yes, sir. सो वी गो टू नेक्स्ट प्रॉब्लम. ये सब क्लियर करने दो मुझे. रेस्ट ऑल ऑफ यू गॉट इट राइट. सो आगे बढ़ते हैं. डू आई वांट टू डू दिस? यस, आई वांट टू डू दिस. दिस इज अ ग्रिड इन प्रॉब्लम, सो आंसर आपको निकालना है. चलिए डू दिस. अ मिनट्स टाइम. कैलकुलेटर अलाउड है अब तो डिजिटल एसएटी में फॉर ऑल सेक्शंस. तो अगर कैलकुलेटर यूज करना है तो करो. मुझे लगता है बिना कैलकुलेटर फास्ट हो जाएगा ये. डेटा तो समझ लिया है हमने. Attack the question now. Based on line of best fit to data represented, what is minimum starting salary in thousands of dollars at company X? Minimum starting salary. 1 मिनट भी नहीं चाहिए, 10 seconds का क्वेश्चन है ये. So I think सारा निष्ठा ये करेक्ट है. केसर आंसर आपको लिखना पड़ेगा. तो जो आप मुझे भेज रहे हो इस तरह से लिख सकते हो क्या आंसर ग्रिड इन में? Whatever you have sent me. So please send me the answer that you're going to write or rather type. Sir, Yes. Sir, for the grid-in in the online SAT, it's the same way how we do the grid-ins on Khan Academy? नहीं, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है सारा. मैं अभी बता देता हूँ since you have asked me. So guys, answer is, अगर आप आंसर मुझे 20,000 दे रहे हैं, your answers are wrong. You cannot send answers 20,000 2 followed by 4 zeros या 20K. Correct answer would be 20. That's all. Because read the question. वापस पढ़ते हैं question. Based on the line of best fit to the data represented, what is minimum starting salary in thousands of dollars at company X? Answer is 20. और यही लिखना है आपको ग्रिड इन में. अब मैं स्टॉप करता हूं एंड आई कम डाउन टू क्वेश्चन विच सारा दास आस्क्ड मी. समझ में आ गया ना केसर क्या गलती है? क्योंकि क्वेश्चन में थाउजेंड्स, वो यूनिट में थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स ही है, आपको 20 लिखना है वहां पे. नाउ कमिंग डाउन टू, आई गो टू माय वर्किंग शीट. शी आस्क्ड मी कि अब डिजिटल एसएटी में कैसे होगा ग्रिड इन प्रॉब्लम्स. एनी आइडिया?
Anybody who can help me here? Any idea? नहीं, no one. मुझे देखने दो एक एक का चेहरा। पे है, हाँ, कोई आइडिया है किसी को? कैलिब, एनी आइडिया ऑन दिस? हाउ आर ग्रिडिंग्स डन ऑन डिजिटल एसएटी? सर जैसे यस, बोलिए मिस कुमावत। सर जैसे आपके अभी स्क्रीन पे क्वेश्चंस है वैसे ही दिए होंगे और ऑप्शंस हमें जस्ट ऑप्शन ग्रिडिन में तो ऑप्शन होता ही नहीं है ना। ऑप्शंस कहाँ होते हैं ग्रिडिन में? ग्रिडिन मतलब वो जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप बोल लो। चलो, तो कैसा होगा? छोटा सा चेंज है, आपको याद होगा व्हेन इट वाज पेपर पेंसिल बेस्ड, जब हम लोग इसको कर रहे थे, तो आई यूज्ड टू टेल यू कि एक ऐसा ग्रिड आएगा 4 कॉलम्स का। ऐसा बताया था मैंने आपको, आपकी बुक में भी है। फर्स्ट कॉलम में यू आर सपोज टू राइट विद पेंसिल, एंड नीचे वाले कॉलम्स में कॉरस्पॉन्डिंगली कुछ नंबर, सिंबल्स, फ्रैक्शंस का कुछ होगा, विच यू विल हैव टू, लेट्स से 1 है तो आप इसको डार्क करोगे पेंसिल से। ये होता था पेपर पेंसिल बेस्ड में। डिजिटल एसएटी में क्या होगा? सिंस दिस इज डिजिटल एसएटी, गाइज, यू विल हैव 5 डिजिट या कैरेक्टर का स्पेस। डिजिट नहीं बोलता हूं मैं, कैरेक्टर बोलता हूं। 5 कैरेक्टर का स्पेस होगा, प्लस देयर विल बी एन एडिशनल स्पेस फॉर यू टू पुट अ प्लस और अ माइनस साइन, विच मीन्स अब ग्रिडिंग क्वेश्चंस में नेगेटिव आंसर्स भी एक्सेप्टेड होंगे। नेगेटिव आंसर्स भी आ सकते हैं, जबकि ओल्डर फॉर्मेट में वो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही होता। अभी ऐसा नहीं है। योर आंसर कैन बी फ्रैक्शन, डेसिमल, ये सब हो सकता है, प्लस वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। तो एक साइन के लिए एक स्पेस होगा और बाकी आपके पास स्पेस जो होगा शॉर्ट आंसर लिखने के लिए होगा। तो लेट्स से योर आंसर इज 2/3, तो आप इसको 2/3 लिख सकते हैं। आप इसको 0.6 1 2 3 4 5 ऐसे लिख सकते हैं। आप इसको 0.667 ऐसे लिख सकते हो। मान लो नेगेटिव है, -2/3 आंसर है, तो एक ये नेगेटिव यहां लगाना हो। I don't know, Sarah, if you asked me this, but have I answered your question now? Yeah, sir. So remember, digital SAT में 5 डिजिट या 5 कैरेक्टर्स तक का आंसर हो सकता है। ओल्ड फॉर्मेट में ये सिर्फ 4 था, 4 ही कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और वो हमेशा पॉजिटिव होता था ओल्ड फॉर्मेट में। डिजिटल में नेगेटिव भी हो सकता है, वो 6th कैरेक्टर बन जाएगा। ओके निष्ठा, चलो, इसने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा था, तो इसका आंसर है 20, और आप लोगों ने बहुत समय लिया, ये देखने से ही लग रहा है। इफ समबडी इज फ्रेशर, मतलब 0 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है, तो 0 इयर्स पे उसकी सैलरी $20,000 है, तो 20,020 विल बी द आंसर। चलो, वन मोर प्रॉब्लम ऑन दिस सेट, एंड देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट। Let's start. What would be the expected salary for a person with experience of 35 years? This is the question. So you'll have to do extrapolation because data 25 years तक का है, इसको extrapolate करो, trend line को समझो, and 35 years of experience पे salary बताओ। Which option for sure is not the answer, guys? ऑप्शन ए तो है नहीं। यस, बिकॉज 25 इयर्स पे ही सैलरी 61 से तो ज्यादा ही दिख रही है, तो 35 पे तो ज्यादा ही होना है, बिकॉज ट्रेंड इज ग्रोइंग अप। तो बी सी डी में से आपको पिक करना है। चलो करो। अगेन आई विल बी इंटरेस्टेड इन योर मेथड। करेक्ट।
So we will start with you, Kesar Patil. I give you, let's say, 10 seconds more and then we start discussing this with you. What will be salary of person with 35 years of experience? Among B, C, D. And I'm more interested in how is that salary that you have calculated? What happened, guys? Whatever you are thinking, Caleb, that is the answer. Good. कौन बचा है? केसर, सानवी. I am not sure of my method though. ठीक है? We'll check your method right now. Sanvi, answer is correct and please unmute yourself. I want to know your method. हाँ, तो कैलेब ये तुमने एकदम सही बोला. तो एक मेथड है which is luck plus arbitrary. Method is arbitrary and your luck works and you get the answer. दूसरा है थोड़ा सा scientific. लक नो लक से फर्क नहीं पड़ता है, वो साइंटिफिक मेथड है. तो दोनों देखेंगे, एक आर्बिट्ररी मेथड से भी देखेंगे और एक लक वाले मेथड से भी देखेंगे. लेट्स सी सानवी ने क्या किया. सानवी, वी स्टार्ट विद यू. Sir, I actually did through an estimation method. So 35 minus 25 is 10. So this means we need to see on a scale of 10 years. So I took like 10 years before 25, that was 15. So with 15 years of experience, we have approximately around 46,000. That's what I estimated. And for 25, I took it to be 64. And when I subtracted it, I got 18. And then I added 18 to 64. And then I got 83 exactly. Wow. So, Caleb, we are doing the scientific method first. Guys, मैं stop कर रहा हूँ and I will reproduce. चलो, समझ में आया इसने जो बोला? नहीं, सानवी भास्कर ने जो बोला वो समझ में आ गया? ठीक है. So I'll reproduce whatever Sanvi said. तो आप लोग अपनी बुक में देखना. So basically they are asking give salary for 35 years. अब कोई पूछेगा 40 years, कोई बोलेगा 50 years experience पे salary दो. So why not what Sanvi is saying? Create an estimation method. Estimation मतलब वो line का equation निकालने की कोशिश करते हैं. So let's say line का equation is y is equal to mx plus c, where c stands for, as per data, c stands for, बोलो. Y-intercept. हाँ, y intercept तो समझ में आता है. Starting salary. So 20,000. So 20. When experience is equal to 0. हाँ जी, correct. 20,000, correct. X stands for जो भी आपका number of years of experience. Y stands for salary at X. And M stands for rate of growth of salary. भाई मैथमेटिक्स को हमने रियल लाइफ में लगा दिया तो बेसिकली वेरिएबल्स का मतलब यही है ना. C is nothing but starting salary, M is nothing but rate of growth of salary, X is number of years of experience, Y is salary at X. बोलो guys, is this thing clear? तभी सानवी का मेथड समझ में आएगा. ये क्लियर है जो मैंने लिखा है सारा? What do you say? Okay. So if I now put values, I know like she said, and we are doing it everything in thousands. So this is 20.
स्टार्टिंग सैलरी इज 20, M मुझे पता नहीं, X I नो मुझे निकालना है for 35 M. So my equation becomes Y is equal to 35 M plus 20. Bolo? Yes. The whole fun lies in finding out what is M. M find करते हैं. M find करने का तरीका है I am going back to my graph. ये सानवी ने यही सब किया, मैंने बस उसको थोड़ा सा आर्टिकुलेट बेटर कर रहा हूं मैं. M निकालने का तरीका है y2 माइनस y1. ये बड़ा वाला ट्राइंगल बना लेते हैं ना, ये ट्राइंगल, ये वाला. लेट्स मेक दिस एज ट्राइंगल. ये ट्राइंगल बना लेते हैं. एक सीधी लाइन नहीं बनती मुझसे, ये ऐसा बना, ये 90 डिग्री हुआ, M बनाते हैं. तो y2 माइनस y1, वैल्यू ऑफ y2, व्हाट इज वैल्यू ऑफ y2? क्या मैं बोल सकता हूँ 65 इज y2? 65,000 is y2 minus y1 is 20 upon x2 is 25 minus x1 is 0. बोलो गाइस, ये m है. y2 65,000, y1 20 upon x2 25 minus x1 0. मैंने वो कोऑर्डिनेट्स रखा into 35 plus 20. So 65 minus 20 is 45 upon 25. 5 9s are, 5 5s are. So this becomes 9 into 9 by 5. बहुत hodgepodge हो रहा है. So salary at 35 years will be equal to 9 by 5 of 35 plus 20. 5 1s are 5, 5 7s are 35. 9 7s are 63 plus 20 is equal to 83 in thousands of dollars. Hence, salary at 35 years of experience is 83. बोलो, are we making any sense here? क्या ये समझ में आया? Okay. Sanvi, you did this. The only difference between what Sanvi did and what I did here is, उसने वो जो y2, y1, x2, x1 लिया ना, उसने उतना बड़ा नहीं लिया. उसने y2 को 15 ले लिया, नहीं y2 को 25 ही लिया, y1 को 15 ले लिया. नहीं सॉरी, उल्टा बोल रहा हूं मैं. x2 को उसने 25 लिया और x1 को 15 लिया, राइट सानवी? Yes, sir. बस, और बाकी उसने यही सब किया है. Sir, is there any other method except these two? Which is the first method? No, just Sanvi's and yours. Because I did the same thing, नहीं but तो I'm हम asking दोनों if तो there's... सेम नहीं, बट वी आर टॉकिंग इन सेम लैंग्वेज. दैट इज माय पॉइंट. एक ही मेथड है वो जो हम दोनों ने किया है, which is y is equal to 9 by 5 of x plus 20. अब आप कोई भी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस मुझसे पूछो, मैं x में वो ईयर ऑफ एक्सपीरियंस रखूंगा और सैलरी निकाल के दे दूंगा आपको. मैंने Yes, उसका sir. इक्वेशन ही बना दिया. I did by the same method, but I'm asking if there is any other method to देयर solve इज this. वन मेथड है ना जो मैंने बताया था, आर्बिटरी एंड लक. एक आर्बिटरी प्लस लक का मेथड है, वो भी सिखाते हैं, वो भी करते हैं. बट ये मेथड क्लियर हुआ? Yes, sir. कि m निकाल लो, और ये चारुल कुमावत, ये सब समझ में आ रहा है तुमको? हाँ सर. अच्छा ठीक है. So this is that equation. Now let's go to the arbitrary method. It is not so arbitrary also, let me tell you. In a time limited test ये कर सकते हो जो भी मैं बताने वाला हूँ. तो किसी ने और कुछ किया है तो बताओ, कोई और इनोवेटिव तरीका है क्या विदाउट डूइंग इक्वेशन? इक्वेशन इज फूल प्रूफ, लेट मी टेल यू. अगर इक्वेशन बना के किया तो गलती नहीं होगी, एंड यू कैन सॉल्व मेनी अदर प्रॉब्लम अगर ऐसा कुछ और भी आया तो. बट लेट्स से वो नहीं है. So Nistha, whatever you asked me, उसको करने की कोशिश करते हैं. This was ruled out. 25 में this is very close to 65. This is ruled out. The fight is between C and D, right? Okay. अगर मैं देखूं for every one block, ये each block is of 5 years. Each block is of 5 years. So this trend is going to continue. ये ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा. And before we touch 30, अगर मैं इसको 30 मान लूं, so before I touch 30, I will be crossing 70. Okay, 65 से ये कुछ 72 पे आ रहा है. So 96 is a huge value because in next 5 year का block whichever I make,
अगर मेरा स्क्रीन में क्रॉस करके और इसको बाहर ऐसे बनाने की कोशिश भी करूं एंड दिस इज 35, तो ईच ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है 5 years का, वो एक्चुअली $18,000 का है जो वो अभी सानवी ने बताया, बट ईच ब्लॉक दैट वी आर क्रॉसिंग, द पॉइंट इज आई विल बी सेट 72, 73, तो मतलब कुछ क्या बोलना चाहिए, आई शुड बी अनदर 9,000 और समथिंग इन दैट ब्लॉक, वो 9,000 और मैं ऐड करूंगा, आई फॉर श्योर विल नॉट टच 96, वो आंसर 83 होगा बिकॉज ऑप्शंस आर वाइडली स्पेस्ड। बट अगर ये 85 होता तो ये मेथड नहीं वर्क होता। अगर सेकंड फोर्थ ऑप्शन 85 होता देन इट वुड बी वेरी वेरी डाइसी एंड रिस्की टू से कि वो 83 है या 85 है। So having said that, why did I stop here? Let's solve this problem and I'll give you only 10 seconds. हाँ, क्या बोलो. Any other question? So can you show the previous page where you solved? हाँ, why not? ये वाला पन्ना? Previous than this. ये वाला step? Okay. Let me know when done. Sir, which question? Done. हाँ, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुको. Okay guys, so I'll make myself a spotlight and we go back to the sheet. 10 seconds for this question. Saradas, correct, very good. Sir, done. Okay, Charul, hold. Yes, Kesar. देखते हैं कोई फंसता है क्या इस गूगली में, अभी तक तो नहीं. निष्ठा करेक्ट, कैलब, सानवी, कैलब करेक्ट, सानवी वेटिंग फॉर यू. अभी तुमने तो उसको सॉल्व किया है इसी मेथड से सानवी. लेट मी अप्लाई सम प्रेशर ऑन हर. चलो, what is the equation of line of best fit? Charul, please announce your answer. Sir, option A. Option A. All of you got it right. Two-way tables में आते हैं guys. Two-way table बहुत simple सा है. There's not much to add. Basically, two-way table will be like a 4-cell table where you have something in column and other things in row, and we have to solve it. So, for example, ये वाला question करते हैं. Genetist is comparing inheritance of white eye in female and male and female fruit flies. The following table shows result of the investigation. Okay, based on the information in the table, as a percentage, approximately what is the relative frequency of male fruit flies that have white eyes? Male fruit flies that have white eyes. So how many male fruit flies that have white eyes? How many such flies are there? 62. So this is my desired number. Relative frequency hota hai desired upon total. So what is the relative frequency of male fruit flies that have white eyes? So total male fruit flies kitne hai? 83. And of these 83, 62 have white eyes. So this is the relative frequency. जो probability में भी पढ़ा है हमने, desired upon total. The whole idea is, or the I think the crux is to find out कि total क्या होगा या desired क्या होगा. So total male are 83, of which 62 have, ये तो given condition है, relative frequency of male flies, which is 83, and they have white eye is 62, 62 upon 83. इसको solve करो and come down to your answer.
हाँ, ये तो दिख रहा है इतने दूर दूर हैं ऑप्शंस. आंसर इज डी, 875%. है ना. 2 3s अगर ये 60 होता और ये 80 होता तो आई वुड हैव रिटन 30/40. 30/40 is 3/4, which is 75%. Answer is D. So this is two-way table for you. Let's do this one. Calculator allowed है and I give you 1 full minute. Let's solve. अच्छा, ये question number 20 है. Heading of the table is jobs added in 5 states in US from 2011 to 13. Jobs added data in US top 5 states from 2011 to 2013. ये table का heading है. So they are asking, according to the information in table on left, what was approximate population of California from 2011 to 2013? This is total jobs added. Period is same, हाँ, ये 2011 से 2013 का data है. And this is new jobs per 10,000 residents. कैलिफोर्निया का population निकालना है. In millions, because options are in millions. Sorry? Can we round it off? Yes, you can round it off. Why not? But if you look at options, हाँ कर सकते हो. बहुत दूर दूर हैं options. Yes, correct guys, correct. So Nishtha, Kesar, Sara, answer is correct. No, not exactly, Callum. Let me help you out. Or maybe you want to check your calculation, recalculate. I mean, you can only go wrong with your calculation. Concept तो बहुत simple है. Unitary method से इसको crack कर सकते हो आप. Okay, Sanvi, hold on. हाँ, नहीं एक और तरीका भी है गलत आंसर लाने का. मिलियंस में कितने जीरो होते हैं सानवी? हाउ मेनी जीरोस इन अ मिलियन? अनम्यूट करो, बोलो हाउ मेनी जीरोस इन अ मिलियन? 6. करेक्ट. रीचेक, चेक करो आपने जो कैलकुलेशंस किए हैं आपने सही किया है क्या? जीरोस में गड़बड़ की है आपने सानवी. A million means 10 lakh. It has 6 zeros, one followed by 6 zeros. Charul, you want me to do this? Correct, Sanvi. समझ में आया आपने क्या गड़बड़ की थी? Caleb, are you ready with your new answer? चलो करते हैं, इतना टाइम नहीं देना है इस क्वेश्चन को. So they want California का population. If you look into the data says 235 jobs. California को ही देखो बस. Let's look at California state. So it says 235 jobs were added for every 10,000 people in that state. So if 235 jobs were added for 10,000 people, if so many jobs were added, then how many people? बस ये एक सिंपल सा यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करो. तो अभी कर लेते हैं. नहीं, मैंने तो स्पॉटलाइट बना लिया है, रिप्लेस करो. तो अभी करते हैं. 235 जॉब्स को ऐड किया फॉर एवरी 10,000 पीपल. सो ये फिगर मुझे बताओ ना क्या है? 90 4500.
9044500. अगर इतने jobs add हुए, so this is jobs added. This is population. So many jobs were added for 10,000 people. So if so many jobs were added, population will be unitary method से कर रहे हैं. 500 into 10,000 divided by 35. अब हमको निकालना है millions because everything is in millions. So divided by 10 to the power 6 because 1 million में 10 लाख होते हैं. तो देखो 1 2 3 4 5 6 ये सारे zeros कैंसिल हो जाएंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा. So it is reduced to 9045 divided by 235. ये कैलकुलेट करो, approximately 38 millions के आसपास आना चाहिए. And answer would be option C. Bolo Caleb? Got it? Okay. So I'm going ahead and let me see if I want to do something else. No, I don't want to do this problem. ये वाला करना है क्या मुझे? Non-historically नहीं. So I come down to bar graphs, guys. So yes. Sir, in the same question, there is question number 21, which I'm not getting it. एक मिनट, ये क्या बोल रही है? क्वेश्चन नंबर 21. ओके, सो चारों लाइन सी की मेरे पास वो इसमें है क्या स्लाइड में? एंड सिंस यू हैव रेज्ड अ डाउट देयर, मेरे पास क्या 21 नहीं है. 21 मुझे ढूंढना पड़ेगा. ठीक है, तो एक काम करते हैं चारुल, मुझे टाइम दो. क्या टाइम हो रहा है? 12:47. यू गाइज नीड अ ब्रेक और हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं? ब्रेक चाहिए? हाँ तो ठीक है. वैसे हो गया ब्रेक का टाइम. सो वंस वी रिटर्न आफ्टर ब्रेक, मैं 21 को लोकेट करके स्क्रीन पे लेके आता हूँ. 5 minutes वाटर ब्रेक, वी मीट अगेन. टाइम बाय माय वॉच इज 12:48. 12:53 पे हम लोग वापस मिल रहे हैं. टेक अ ब्रेक प्लीज. थैंक यू.